Assalamu alaikum, dear students of class medical and pre-engineering group A. This is your lesson number 2 of the story A Long Walk Home, and I hope you have read the text of the story and understood it properly. Students' learning outcomes. Dear students, after listening to today's lesson, you would be able to have clearer concepts regarding the story in order to be capable of answering exercise questions. You would be able to learn the use of prepositional verbs using prepositions up and down. You would also be able to learn the meanings and uses of different idioms related to weather. Now, students, I suppose after listening to the first lecture sent to you, you people would be able to answer all these questions which are mentioned in the exercise from question number 1 to 9. And if you find any confusion and if you are unable to write the answer to any question, you can ask and then I would send you the answer. Students, on page number 132 of your textbook, there is a vocabulary exercise that you have to solve, and you need the knowledge of prepositional verbs for that. Definition of the prepositional verbs is a prepositional verb is the combination of a verb and a preposition. Here are some examples: bear with, tell upon, bring up, slow down, concentrate on, etc. Students, the addition of some specific preposition to some verb normally changes the basic meaning of the verb, and the phrase sometimes comes to have a different meaning. Students, the use of up and down after different verbs gives a specific meaning to the phrase. For example, bring up has one meaning and bring down can have some different meaning. Now, if, for example, we notice the meaning of bring up, there are these three meanings of the phrase bring up. Number one, to bring to maturity means परवरिश करना. To cause to stop suddenly means किसी चीज़ को अचानक से रोक देना. या to bring to attention किसी की तरफ तवज्जो दिलाना या कुछ introduce करवाना. Now students, if we read the sentence number 4 on your textbook page number 132, you would notice that bring up will be used with the meaning of to bring to attention. The sentence would mean then, when you go to London for the meeting, जब आप लंदन मीटिंग के लिए जाएंगे, please remember to bring up the whole issue of pay cuts. तो बराए मेहरबानी याद रखें कि आपने वहाँ पर pay cuts का issue जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दिलानी है. Similarly, students, speak up means to speak loudly, and speak up also means to express an opinion freely. Now, in sentence number 2, speak up will be used with meaning to speak loudly and distinctly. Distinctly means clearly. The sentence is, I didn't hear what you said. आपने जो कहा मैंने नहीं सुना. Speak up a little. तो वो ये कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा ऊंचा बोलें. Students, this is your home assignment number 1. Search and find the meanings of following phrases from the dictionary and solve the exercise on page number 132. Number 1, put down and put up, blow up and blow down, slow down, go up and go down, knock up, knock down, set up, set down, calm down, back up, back down, blow up, blow down. This activity will help you in solving the exercise given on page number 132. Students, here you find some idioms and their meanings. Idiom number 1 is under the weather. This idiom is used for the person who is slightly unwell or who is in low spirits. वो शख्स जिसकी तबीयत खराब हो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि he is under the weather. Then rain on someone's parade. This idiom is used for the situation when somebody's plan is spoiled. कोई प्लान करता है कुछ करने का और वो सारा प्लान खराब हो जाता है, उसके लिए इडियम यूज किया जा सकता है रेन ऑन समवन्स परेड. देन इडियम नंबर 3 इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इसका मीनिंग है एवरी डिफिकल्ट और सैड सिचुएशन हैज अ होपफुल एस्पेक्ट. मतलब ये कि अगर कोई भी सूरत हाल मुश्किल हो तो उसमें भी बेहतरी के चांसेस होते हैं और कोई ना कोई अच्छी होप उस सिचुएशन के बारे में होती है जो कि बाद में सामने आ जाती है. हेड इन द क्लाउड्स मीन्स टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन.
ये उस शख्स के लिए यूज़ होता है, अ पर्सन हु इंडल्जेस इन डे ड्रीमिंग, एक शख्स जो कि अपने ही ख्यालों में गुम रहता हो, जिसको ना पता हो कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसके लिए कहा जा सकता है कि ही इज़ हैविंग हिज हेड इन द क्लाउड्स. Then next idiom is storm in a teacup. It means get outraged or excited about a trivial matter. यानी मामूली सी बात पे गुस्से में आ जाना और या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, उसके लिए ये फ्रेज यूज़ इडियम यूज़ किया जा सकता है, storm in a teacup. Then next is get wind of something. It means to hear a piece of information that someone else was trying to keep secret. कोई इस तरह की information सुन लेना जो कि कोई और राज में रखना चाह रहा हो. Then it never rains but it pours. It means to arrive all at the same time. Means some situation of misfortune and difficulty. These situations normally come one after the other. Under a cloud. Under a cloud means under suspicion or discredited, means वो शख्स जिस पर शक हो और जिसके को मतलब इफ़ अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, उस पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लग जाए, उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, उसके लिए कहा जा सकता है कि ही इज़ अंडर अ क्लाउड. देन हॉट अंडर द कॉलर. नेक्स्ट इडियम इज हॉट अंडर द कॉलर. इट मीन्स टू बी एंग्री, रिजेंटफुल और embarrassed. Then blow hot and cold. It means to behave inconsistently between extremes of moods. यानी कभी किस तरह से का बिहेवियर हो जाए, कभी किस तरह से, यानी जो शख्स अपने इमोशंस पर जिसका कंट्रोल ना हो, जिस तरह से कहा जाता है ना, पल उर्दू में कहा जाता है पल में तोला पल में माशा, तो दैट कैन बी इन इंग्लिश द idiom that is used for this situation is blow hot and cold. Then make heavy weather of something. It means to have unnecessary difficulty in dealing with a task or a problem. यानी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना इतना मुश्किल ना हो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग. देन द लास्ट idiom is any port in a storm. Means in adverse circumstances one welcomes any source of relief or escape. यानी जब कोई भी मुश्किल सूरत हाल में हो तो वो फिर कोई भी उसको सोर्स मिल जाए सुकून का, कंफर्ट का या बच निकलने का, तो वो सोर्स को यूटिलाइज करता है. जिस तरह से उर्दू में इसके लिए एक मुहावरा है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इंग्लिश में हम उसके लिए इडियम का यूज़ कर सकते हैं कि एनी पोर्ट इन अ storm. Means के if you are in difficulty तो you would welcome of course any source of relief or escape. Students, as you have understood the meanings of all the idioms which are given on your textbook page number 133, now I think it would be easy for you to solve the exercise that is mentioned here. Solve the exercise given on textbook page number 133, taking help from the meanings of the idioms you have learned today. This is your home assignment number 2.